let's start. Question number 2 of the worksheet on connected particles. Particle A and B of mass 0.2 kg and 0.3 kg respectively are connected by a light inextensible string. The string passes over a smooth pulley at the edge of a rough table. So the table is rough, meaning that there is going to be some friction in the direction opposite to the movement. Okay. Particle A hangs freely and particle B is in contact with the table. Okay. The system is in limiting equilibrium with the string taut and A about to move downwards. Find the coefficient of friction between B and the table. Okay. So it said that A is about to move downwards. And the system for now is in equilibrium. It's not moving. But when it will move downwards. Okay, let's enter the forces that we can. Downward direction, there's going to be weight at A, and that weight is going to be 2 Newton because the mass is 0.2. So 2 Newton. Then in the upward direction, there's going to be T, the tension. Okay, these are the two forces acting at A. At B, similarly, downward pointing is going to be the weight, 3 Newton. Upward pointing is going to be the normal contact force R. Towards the left is going to be the tension. And since the movement is going to be towards the left as A goes down, then in the opposite direction, there's going to be friction because we were told that the table is rough. So this is going to be mu R, friction. Okay. So we have to find this mu, the coefficient of friction. So let's look at A first. System is in equilibrium. That means it's not moving, meaning acceleration is 0. So forward force is going to be equals to backward force. Forward force equals backward force. So tension is equals to 2. Now, since the string is the same, so at B, now we have the value of the tension towards the left. It's also going to be 2 Newton. Okay, now let's take a look at particle B. So T is equals to mu R. T we know is 2 is equals to mu and R is equals to 3 newtons because this is balancing out this. So R is equals to 3. So mu will be equals to 2 upon 3. Okay, any questions so far? Okay, next is a force now acts on the particle B. This force has a vertical component of 1.8 Newton upwards and a horizontal component of X Newton directed away from the pulley. Okay, so now let me clear the forces at B because they're adding something to it. They're saying that there's a force acting on B. Whatever that force is, they're not giving you the angle, they're not giving you the magnitude. Instead, they're giving you the vertical and the horizontal component of this force. So that's even better. So it says that in the X direction, the component is X, and upward, the component is 1.8. Okay. Upward, we also have R. Downward, we also have mg, which is 3 Newton. Okay. And towards the left, there's tension.
And now a force now acts on particle B. This force has a vertical component of 1.8 and a horizontal component of x directed away from the pulley. Okay, so that's the blue direction, which is directing away from the pulley. The system is now in equilibrium, limiting equilibrium with the string taut and about to move upwards. So now A is about to move upwards. So I'm going to change the direction of motion. A is going to move upwards because of the new force at B. And then, of course, B is going to move towards the right. So now in the opposite direction to the motion, we'll have mu r. So mu r now changes its direction since the motion is going to be now towards the right. So friction is going to point towards the left. Now we have to find the value of x. So again, let's look at A first. Forward force is equals to backward force since system is in equilibrium. So T is equals to 2. And at B, first we can say that R plus 1.8. There are two upward forces at B. R plus 1.8 is equals to 3 Newton. So R is going to be 1.2 Newton. Okay. Now the right force is X. Equated to the left forces, there are two. One is tension and the other one is mu R. We have all the values. Tension is 2 Newton as found at the start. Mu was found in the previous part, 2/3, and R was found to be 1.2. So this gives us the value of X. (2.8 newtons). कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो. Okay. Question 3. Okay. Particles P and Q are attached to opposite ends of a light inextensible string. P is at rest on a rough horizontal table. It is at rest. That means its U is 0. And the surface is rough. So that means there's going to be a force of friction in the opposite direction to the motion. The string passes over a small, smooth pulley, which is fixed at the edge of the table. Q hangs vertically below the pulley. The force exerted on the string by the pulley has magnitude 2 under root 4 under root 2 Newton. Acha, now this is something different. The force exerted on the string by the pulley has a magnitude of 4 under root 2 newtons. They're saying that this pulley exerts a force on this string. So then it's going to be in this direction. So in this direction, you have an extra force in this question. Usually there's no force mentioned on the pulley. In this question, there is 4 under root 2. Okay. Acha ji.
The coefficient of friction between P and the table is 0.8. Show that the tension in the string is 4 Newton and state the mass of Q. Usually we're given the mass first, and using that mass we find the tension. For example, this is mass, let's say 2 Newtons, and this is T. So then we say that since the system is in equilibrium, up force is balancing the down force, so T is equals to 2. However, we don't have the mass here. Instead, the only thing we know is that there's a force in this direction acting on the thread by the pulley. Also, we know that if you account for this as a particle, then there's going to be tension here and a tension here. And then what's the angle between both the tensions? It's 90 degree. And this force, let me draw it here now. This force acting upwards is actually the resultant force of the two tensions. This force, I've extended it. So that's actually a resultant force. There's tension in this direction, there's tension in this direction, and there's a resultant force, which is actually, you can say it's in this direction. We can use the Newton law here that every action has an equal and opposite direction. So every action has an equal and opposite reaction. So if there's a force of 4 under root 2 Newton acting on the pulley by the string, and it's not, and the system is in equilibrium, that means that there's a force in the opposite direction of the same magnitude. So it's kind of like the relationship between normal contact force and the weight. If weight is there, then to balance it out, there's a normal contact force upwards. So similarly, there's going to be a 4 under root 2 Newton force in this direction. So now it makes more sense that this force, 4 under root 2, is the resultant of T and T. Or you could have kept it like this. That was fine as well. Yeah, Sebi, we can see that T is the yellow line is resultant of the two tensions. Okay, so now I'm going to apply Pythagoras here. T square plus T square is equals to 4 under root 2 whole square. So 2T square is equals to 16 into 2, which is 32. So T square is equals to 16. So T is equals to 4 newtons, and that is what we had to show. Show that T is equals to 4 newton. Shown. Okay. Now we have to state the mass of Q. So upwards from Q, upward there's tension. Downwards there's mg. So this was part 1, and continuing it, we know that at Q, tension is equals to mg. So tension came out to be 4 is equals to m times 10. So m is 0.4 kgs. So the mass of the particle Q is 0.4. Okay. Given that P is on the point of slipping, find its mass. Okay. Now P will also slip. It's going to move towards the left. Since it's getting the pull from that direction. Okay. So it's going to move towards the left.
which means that friction is going to be here, mu r, weight is going to be here, and the particle, the mass is m, g or 10m, and this is r, and this is t. Okay. So for 2, it's going to be, it's still in equilibrium. So tension is equals to mu r. Tension is 2. Mu is 0.8. So we can find r. R is going to be 2 upon 0.8. It's 2.5. So now R is equals to M 10M. So 2.5 is equals to 10M. So M is equals to 0.25 kgs. Acha, I'm sorry, tension was not 2, tension was 4. So answer galat aaya. Let's fix that. This is 4, not 2. And then this would be 4 divided by 0.8. It's 5. So then 5 is equals to 10m, and it's going to be 0.5. Okay. Next, it says that a particle of mass 0.1 kg is now attached to Q and the system starts to move. Find the tension in the string while the particles are in motion. Okay. So now an extra weight or mass of 0.1 Newton is attached to Q. So there's an extra mass attached. So now it becomes bigger. So now its collective mass becomes, Q's mass becomes, it was earlier it was 0.4 and add 0.1 to it. So it's going to be 0.5 kgs. So there's going to be a 5 Newton force acting downward at Q now. And acting upward is going to be T, which has now changed in value. It's not 4 anymore. It was 4 when the system was in equilibrium. Now the system will move because of the added mass at Q. Okay, so that's Q. Now let's take a look at P. Okay, so P will have a tension in this direction and R in this direction. Its weight is 10 times its mass. So 10 times 0.5 is going to be 5 newtons. Okay. And towards the right, there's mu R. So let's write that. Okay. So we have to find the value of, find the tension in the string while the particles are in motion. So now we're going to use forward force minus backward force is equals to MA, because now there's acceleration. Okay, so at Q, it's going to be 5 minus T. 5 minus T is equals to 0.5 A. Call that equation number 1. And at P, there's T minus mu R. Forward force minus backward force is equals to MA. So it's going to be T minus mu was 0.8 and R is
5 kgs because the downward weight is 5 kg. So mu is 5, sorry, R is 5 is equals to M was 0.5 for Q. We had found it here. So 0.5 times A. So this is going to be T minus 4 is equals to 0.5 A. This is equation 2. Now you solve these equations simultaneously and get T and A. खाली A पूछा है नहीं खाली टेंशन पूछे so you don't need to find A. Directly A को eliminate कर दो और T find कर लो. Tell me what you get please. Find कर रहे हो? You may find acceleration first and then tension. That's fine. You guys are taking forever. I'll just go ahead and do it. Okay. I think I'll also eliminate T first. So I'm going to add 1 and 2. 1 plus 2. So that gives me 5 and minus 4 is 1. And minus T and T gets cancelled is equals to 1A. So A is coming out to be 1 meters per second square. Now I'm going to substitute it in the first equation. 5 minus T is equals to 0.5 A, which is 1. So T is equals to 5 minus 0.5. So T is equals to 4.5 newtons. हो गया ये आयशा, दाऊद और अजहर? आयशा आप कर रही हो ये? आंसर क्यों नहीं आया अभी तक? अजहर मैंने आप 4.6 4.? आपने 4.66 4.66 नहीं है आंसर, 4.5 है आंसर. आपने पहले एक्सेलरेशन निकाली? मैम मैंने पहले टी निकाला है. टी निकाला है, ठीक है. कैसे निकाला है बताओ. मैम मैंने हाँ मैंने गलती की है. मैं एक दफा दोबारा ट्राई करता हूँ. ओके. अजहर आप भी नहीं हो इधर, आयशा भी नहीं है इधर. मैं सीख रही हूँ. जी बस मेरी एक्सेलरेशन 1 आ गई है. मैं टी नहीं आ रहा था सही, वो फिर से कर रही हूँ. ओके. और मैम आ गया. ओके. अजहर आप इधर नहीं हो ना? मैम मेरी आंख लग गई थी. बेटा ये पढ़ना है, तुम्हारे मॉक्स सर पे हैं सबके. मुझे लग रहा है आज कोई ज्यादा एक्टिव नहीं है.
क्योंकि मैंने खुद को नहीं बस पढ़ा पूरा मुझे तो -4.5 आ गई। आपने किस वैल्यू में किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया? ए मैं फर्स्ट और स्ट्रेस सेकंड। वाली तो उसका ये देखो यहाँ वर्किंग हुई हुई है, हाउ इज योर आंसर डिफरेंट देन माइन। ये इसमें देखो नेगेटिव में कैसे आ रहा है। अच्छा मिस मैंने वो टी के माइनस में कैंसिल किए थे ओ, उनसे। अच्छा क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, तब सबने जागे रहना है। अच्छा जी, particle A and B are attached to the ends of a light inextensible string which passes over a smooth pulley. The system is held at rest with the string taut and the straight and its straight parts vertical. Both particles are at a height of 0.36 meters above the floor. The system is released and A begins to fall, reaching the floor in 0.6 seconds. Okay, so ए का जो जब फ्लोर को टच करता है, सो इट टेक्स 0.6 सेकेंड्स, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक तो एस हमें बताया हुआ है, फिर टी हमें पता है। ठीक है, अब हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एज इट फॉल्स। उसके अलावा हमें पता है कि ओरिजिनली रेस्ट पे है सिस्टम, हमें यू भी पता है 0। अब हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, कौन सी यूज होगी जिसमें ए आ जाए यू एस और टी में से? S equals to UT minus half 80 square प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता plus half. है। ठीक है, अब मुझे निकाल के बताएं ए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। क्या आती है ए की वैल्यू? घंटा ही नहीं लगाना सबने, जल्दी से 1 मिनट में निकाल के बता। मैं 0.18 आ गई है। नहीं ये नहीं लिखा हुआ, 12 देखो। Number of money. नहीं, कैसे आ रही है 0.18 आप लोगों की? यहाँ आ गया 0.36 इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ टाइम्स 0.6 स्क्वायर कर लो, वो बनता है बस 0 टू पॉइंट, है। हाँ जी 0.18 ए, और ए के लिए डिवाइड करेंगे अच्छा, तो 2 आ गई। द mass of A is 0.45 kgs। अब ये मैं clear कर रही हूँ। Find the tension in the string while A is falling. Okay, so
अब ए पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है मुझे बताए। Miss weight होएगा 4.5 न्यूटन। हाँ ठीक है, 4.5 न्यूटन वेट है। और कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है ए पे। मैम और जी मैम स्प्रिंग की सॉरी समझ नहीं आई। जो बी के साथ कनेक्टेड है स्प्रिंग, वो अपवर्ड फोर्स होगी। हाँ तो वो क्या होगी फोर्स ए पे, दूसरी फोर्स हर क्वेश्चन में हमने। टेंशन। हाँ जी, टेंशन, ये टी है। ठीक है। और ये ए डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। क्या इक्वेशन बनेगी ए पे। फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। व्हाट शुड बी द इक्वेशन। 4.5 minus t equals 0.45 into 2. यस, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। अब टी निकाल के बताओ।3.6। 3.6 न्यूटन। फिर उन्होंने अगले पार्ट में कहा है मास एट बी बताएं। तो अब बी पे कौन सी फोर्सेस एक्ट करेगी। टेंशन और हाँ, टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी। अपवर्ड। और कौन सी फोर्स है। Miss weight. हाँ, नीचे वेट है। और वेट में मास नहीं बताया हुआ तो हम 10 m लिख लेते हैं। ओके, अब बी पे इक्वेशन बनाए। बी पे क्या इक्वेशन बनेगी। Miss tension same होएगी ना दोनों। टेंशन सेम होगी, हम निकाल चुके। 3.6। तो क्या टेन होगी। एम हम्म माइनस 3.6। ओके, इक्वल्स। मैम हम डिस्टेंस भी बोलते थे। डिस्टेंस नहीं करना हमने, मास की वैल्यू बतानी है। मास निकालने के लिए हमें डिस्टेंस तो नहीं चाहिए। नहीं, ये आपने मुझे बोला है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो उसके इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे क्या होता है। 10 10 m और एक्सप्रेशन हुई होगी। मास 10 m तो नहीं है, मास m है। 10 m थोड़ी है, 10 m तो वेट है, हाँ, m है। अच्छा, फिर इसमें अब एक गलती की है कि इसमें फॉरवर्ड फोर्स 10 m तो नहीं होगी। बी नीचे तो नहीं जा रहा, बी तो ऊपर जा रहा है, ए नीचे जा रहा है। तो फॉरवर्ड फोर्स 3.6 न्यूटन हाँ, से। 3.6 माइनस 10 m इज इक्वल्स टू एम ए। और ए हमें ऑलरेडी पता है 2 है क्योंकि कनेक्टेड पार्टिकल है। एक की अगर एक्सेलरेशन 2 है तो इसकी भी 2 है। अब एम निकाल के बताओ। 0.3. 0.3 kg, ठीक है। हम्म,
ओके, चलिए अगला पार्ट। अगले पार्ट के लिए लेट मी सेंड यू द न्यू लिंक। Part 4. Find the maximum height above the floor reached by B. Okay. Let me clear this. Okay. So, maximum height reached by B. So, पहले तो A इधर आएगा when it touches the floor, और B उतने यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा, ये 0.36 आ गया, और उसके नीचे भी 0.36 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो अभी फिलहाल डिस्टेंस है अबव द ग्राउंड 0.72, लेकिन हमने थ्योरी पढ़ी हुई है कि जब ए आके इम्पैक्ट करता है विद द फ्लोर, तो बी जो अभी इधर है वो थोड़ा सा और ऊपर जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग हो जाती है स्लैक। ये स्ट्रिंग सारी स्लैक हो गई, और बी यहां तक आएगा, कह लो बाउंस तो नहीं कह सकते, लेकिन एक उसको जर्क मिलेगा और वो ऊपर आएगा और फिर नीचे जाएगा। ठीक है, वो ये मैक्सिमम हाइट पूछ रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक हाइट क्या है, पूरी हाइट बतानी है। तो 0.36 प्लस 0.36 प्लस बाकी हाइट। अच्छा जी, अब ये हाइट कैसे निकलेगी? हमें ना यहां से लेकर यहां तक का एस चाहिए। इतने पार्ट का। अच्छा, इस पार्ट में ये जो बी है, ऊपर वाला बी, टॉप वाला बी, इसकी स्पीड क्या है? 0। हाँ, 0। अपनी मैक्सिमम हाइट पे उसकी स्पीड 0 हो जाती, 0 हो गई। ठीक है, और इस पर्पल रीजन में एक्सेलरेशन क्या है? बस 2 ही होगी। नहीं, 2 तब होगी जब स्ट्रिंग टॉट होगा, जब स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होगा। जब स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं रहा तो ये कनेक्टेड पार्टिकल्स नहीं रहे। वो तो कनेक्शन की वजह से, क्योंकि एक का एक्सेलरेशन, एक की 2 थी तो दूसरे की भी 2 होगी, क्योंकि वो कनेक्टेड थे विद टॉट स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग नहीं है टॉट, तो अब जो एक्सेलरेशन है ना, वो हो जाती है फ्री फॉल एक्सेलरेशन। तो अपवर्ड फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या होती है? ये हमने वर्ड, -10। हाँ, -10। ठीक है, सो इस पर्पल रीजन में ए हो गया -10। अच्छा, अब हमें एक और पैरामीटर चाहिए ताकि हम एस निकाल सके, और वो पैरामीटर क्या हो सकता है? इसका इधर की स्पीड, शुरू वाली इनिशियल स्पीड। ठीक है, इधर की इनिशियल स्पीड, तो मैं उसको यू कह रही हूँ, और ना ऊपर वाले को वी कह रही हूँ। वी फाइनल स्पीड है, वो 0 हो गई। ठीक है, अब मुझे ना ये बी की इनिशियल स्पीड चाहिए जो इधर थी, इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे जब बी था ना, तब तक जो स्ट्रिंग था वो टॉट ही था। तो इसका मतलब है जो इस ए की स्पीड आएगी एस राइट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, वो ही बी की स्पीड होगी एट दिस पॉइंट। तो अब यहाँ पे तो हमें काफी सारे पैरामीटर्स पता थे, उससे हम ए की फाइनल स्पीड निकाल लेते हैं और वो ऊपर जाके बी के साथ लिख देंगे। अच्छा, तो अब हमें u पता है 0 है, इधर का a हमने 2 निकाल लिया था, इधर का s 0.36 है, और इधर का और क्या हमें पता था? और हमें अब v चाहिए। टाइम भी हमें पता था 0.6 सेकेंड से।
सब आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 कर रही हूँ। सो वो हो गई 0 +2 और t है 0.6, तो वो आ गई 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे v a का 0.2 है, और सॉरी 1.2 है मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि एट द सेम इंस्टेंट अभी पार्टिकल कनेक्टेड है, तो इधर का भी, इसकी अब हम इनिशियल स्पीड कहेंगे, तो इसका u है 1.2। एक्चुअली v है 1.2, बट सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए वो u बन जाएगा, तो मैं डायरेक्टली u ही लिख रही हूँ 1.2। अब s निकाल लेते हैं। तो अब s निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें इधर? Is 2as equals v square minus u square. सॉरी, दोबारा बोलो, मैंने सुना नहीं। Is 2as equals v square minus u square. ये कौन सी थी इक्वेशन ऑफ मोशन? ये आपने मुझे रीअरेंज करके बताई है। Okay. ठीक है, v square इक्वल्स टू u square प्लस 2s यूज किए। ओके, आई एम गोइंग टू राइट दैट बिकॉज आई एम यूज्ड टू दैट। ओके, अब हमें v चाहिए, तो आई एम गोइंग टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2, a है 2 और s है 0.36। क्या आती है v की वैल्यू? सॉरी, हम तो s निकाल रहे हैं, आई एम सॉरी। v तो पता है, s पता है चाहिए इस पर्पल रीजन। तो that is going to be v square equals u square plus 2as. So 0 square is equals to 1.2 square plus 2. A is -10 and s is s. Find s from here. क्या आता है? Plus 0.072. ठीक है, 0.072। और मैक्सिमम हाइट ऑफ बी अबव द ग्राउंड होगी 0.072 प्लस 0.36 प्लस 0.36, जो कि आता है 0.792 मीटर्स।